السلام علیکم، آداب عرض، وہ باتیں تیری. ہمارے ساتھ موجود ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کے ماہ ناز بہترین شاہکار شرجیل صاحب اور پرانے ہمارے ساتھی شرجیل انور صاحب اور پرانے ساتھی علی عمر علوی اور علی محمد علی، ہمارے جو دریدہ اور دل زبردست دل رکھنے والے محمد علی صاحب، جو کہ ہمارے اردو کے اس میں آپ کی اردو ختم ہو جائے تو پھر اس سے کیا ہمارے ٹیکنیکل گرو، ہمارے شاہکار اور متوالے محمد علی صاحب اور شرجیل صاحب. تو ہم اور آج وہ بھی کدھر گیا یار بھائی، اس کو نہیں بولنا آپ نے. احسان سلیچ صاحب کو آپ بھول گئے. اچھا مجھے نہیں دکھ رہا احسان سلیچ صاحب کدھر ہیں؟ آپ اپنی شکل تو کرائیں، سوائپ کریں نا آپ. ٹھیک ہے. احسان سلیچ صاحب اور احسان سلیچ صاحب کے ساتھ تو بڑی یادیں ہیں اور بڑا مزیدار بات ہونے والی ہے، کیونکہ میں ان سے بات بھی کرتا رہتا ہوں گاہے بگاہے. اور ہم مزے کی بات یہ کہ ہمیں کالج سے نکلے ہوئے تقریباً 30 سال ہو گئے. ایگزیکٹلی کتنے سال ہو گئے؟ 1996 سے اگر ہم لے لیں ایوریج. شرجیل کیونکہ پہلے چلے گئے تھے 94 میں، 95 میں گئے تھے. 25 سال کی ایوریج پکڑ لیں آپ. 25 سال کی ایوریج پکڑ لیتے تو 25 سال ہمیں ہو گئے ہیں. لیکن 25 سال میں آج تک ہماری کوئی بھی کانورسیشن، بات چیت، زوم ٹاک، واٹس ایپ کال یا ملاقات ایسی نہ رہی ہے جس میں ہم نے کالج ڈیز کی بات نہ کی ہو. اچھا میں اور سلیج جیسے احسان سلیج صاحب ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حسن ابدال کے پڑھے ہوئے بہترین اسٹوڈنٹ تھے. تو ابھی بھی میں ان سے اکثر بات کرتا ہوں، بلکہ ہم لوگ پچھلے ہفتے بات کر رہے تھے تو ہم لوگ وہی کالج لائف کی بات کر رہے تھے. اور کچھ اتفاق سے ہماری بات چیت ہماری ایجوکیشن یعنی کہ کیمیکل انجینئرنگ جو کہ یہ اور میں واحد پاکستانی تھے جو کہ پڑھ رہے تھے، اس پہ بات ہو رہی تھی. اور میں اس کو یہ بتا رہا تھا کہ تم کتنے لائق تھے اور کتنے کیا کہتے ہیں تمہارا برین اتنا زبردست تھا. لیکن صرف پرابلم یہ تھی کہ پڑھنے کا دل نہیں تھا، مطلب دل نہیں چاہتا تھا پڑھنے کا، اس کا دل کہیں اور لگتا تھا. تو سلیش کچھ بتائیے کہاں دل لگتا تھا آپ کا؟ میں بتاتا ہوں سلیچ سے پہلے میں کچھ کہوں گا. جو تم بہت پڑھاکو ہوتے ہیں، تم پہ آ رہا ہوں میں. نہیں اپنی باری میں بولنا. ایک منٹ ہاں ضروری ہے. سلیچ کے برین کے کیمیکل دوسری جگہ پہ تھے اس وقت. وہ سلیچ سے پوچھتے نا احسان صاحب. سلیچ جو میں نے ابھی جو غزل پڑھی تھی نا، تو وہ تو اسی میں کنفیوز ہو گیا. کبھی محبت کرتا تھا، کبھی پڑھائی کرتا تھا، پھر محبت کرتا تھا، پھر پڑھائی کرتا تھا. سمجھ نہیں آیا، دونوں نہیں ہوئے ہیں. اب احسان بولے گا یا پھر میں بولوں پھر سے؟ احسان صاحب نہیں، آئی تھنک ہی ہیز لیفٹ دی بلڈنگ. جیسی تو نے بات نظر کی. احسان کا وہ ایک مشہور ترین میں بات بتا دیتا ہوں پھر شرجیل پہ آتے ہیں. اس کو میں نے جب شروع میں ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے اس کو کہا احسان یار کیا کر رہا ہے یار تو؟ کہنے لگا یار بس وہ رات کو جو ہے نا نیند نہیں آتی ہے. میں نے کہا اچھا، تو کیا کہتا کیا کرتا ہے تو نیند کے لیے؟ کہتا ہے یار بہت آسان ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے جتنی بھی سب سے زیادہ مشکل کتابیں ہیں نا وہ نکالتا ہوں میں اور ان کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. تو کہتا ہے ایسی نیند آتی ہے نا ود ان 15 منٹس، تو ٹرائی کر کے دیکھ. میں نے کہا اوکے. So that was the thing back then. In a time we used to get scared of our books so much so that وہ کہتے ہیں نا کہ گبر سنگھ آ جائے گا تو ہمیں نیند آ جاتی. وہی میں تجھے بتاؤں ایک انٹرسٹنگ چیز، وہ بھی جانتا ہے ان کو. ہمارے ایک بڑے اچھے عزیز بڑے ریسپیکٹڈ بیوروکریٹ، ہی واز پارٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ. یہ اس کے آمنہ کے والد صاحب نا، وہ ریسنٹلی پاسڈ اوے انفارچونیٹلی بیکاز آف کووڈ کی کمپلیکیشنز کی وجہ سے. جاوید حسن علی صاحب ویری ریسپیکٹڈ. ابھی بھی جو سارے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے بیوروکریٹس وہ سارے ان کے وہ ہیں. اچھا جب میں نے ان کا گھر بنایا تھا، دس از اباؤٹ می بی 15 ایئرز اگو، 12-15 سال ہو گئے. تو جب ان کا گھر بن گیا نا، انہوں نے ڈنر کیا ہوا تھا میرے دوستوں سے، تم بھی آ جاؤ. تو لکیلی میں ان کا جو سن لا ہے میں اس کو جانتا ہوں، تو انہوں نے اس کو بھی بلا لیا تھا. تو سو وی آر بوتھ سیم ایج. تو ہم دونوں وہاں پہ ایک کونے میں بیٹھے تھے. انہوں نے بلایا تھا یہ اپنا ایک افغانی لائیو کوکنگ کے لیے نا، پٹا ٹکا، اور یہ بڑا بہترین کھانے کے بڑے شوقین تھے اور اپنا باقی بھی کافی شوقین تھے ماشاء اللہ. تو وہ ان کے سارے پرانے دوست، سارے بیوروکریٹس، آل آف دیم ویری ویری ٹاپ بیوروکریٹس. کوئی فائنانس کا ہیڈ رہا ہے، کوئی اس کا پلاننگ کا ہیڈ ہے، تو کوئی فلانا ہے. تو اینڈ مسٹ بی ایٹ لیسٹ 10 بیوروکریٹس اینڈ 4-5 اچھے سینئر بزنس مین لائک اور سارے جو ہیں وہ گورنمنٹ کالج کے پڑھے ہوئے ہماری طرح سے. اینڈ دس از آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایوری بڈی از منیمم 65 ایئرز اولڈ اینڈ دے آر آؤٹ آف کالج فار واٹ 40 ایئرز. ٹھیک ہے. اینڈ اچھا میں ادھر بیٹھا ہوا جس میں اور شایان بیٹھے، ہم ان کو دیکھ رہے لیٹلی وی وere just observing them. اب میرے ان کے نام، آئی ایم ریئلی بیڈ ود نیمس. تو میں ان سے
मैं नामों को नहीं जानता, but I know, I mean, I've seen them in pictures with presidents and prime ministers. मैंने यार ये तो बंदा वो है, ये बंदा वो है, ये बंदा वो है. अच्छा, एंड उनमें से फिर एक जो उनकी बड़ी डीप वॉइस है, वो उस्मान की गली में रहते हैं, जो एक दो घर छोड़ के, वो उन्होंने फैज की गजल गाना शुरू की. उफ यार, आई मीन द वे ही सेड इट, आई मीन ही इज लाइक रियली डीप. वो शराबी वाली आवाज, और उन्होंने गजल पढ़ी. अच्छा, फिर उसके बाद एक और ने पढ़ी, उसने कहा कि फैज ने उसकी शादी पे उनका सेहरा लिखा था. फिर उनको याद था कि जब फैज व्हेन ही केम टू अपना क्या कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट टाइम, so this guy who read his nazm actually read his nazm to Faiz in front of him. फैज के सामने पड़ी थी. Wow. अच्छा, अब दूसरी फिर उन्होंने गजलें गाई, उन्होंने वो इसी तरह डिफरेंट इवेंट्स की बातें की, पोएट्री की बातें की. अच्छा, imagine in that almost 1.5-2 hours, these established bureaucrats and Babe Sare, they never left government college in discussions. They never talked about their achievements कि यार मैंने फलाने की गवर्नमेंट में ये किया था, तो फलाने की गवर्नमेंट में ये किया था, तो फलाने उसके किया था. Yeah, This is absolutely Aliumar, यही मैं बात कर रहा था कि हम लोग माशाल्लाह से शर्जील हो गया या आप हो गए या और हमारे जो दोस्त हैं जिनसे हम बात होते हैं, माशाल्लाह से they are very much well settled and they have achieved a lot in their life. But having said that, हमने अपने जब भी हम बात करते हैं, हमारी ज्यादा टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारी वही स्टूडेंट लाइफ ही होती है. हम कभी भी एक दूसरे के अचीवमेंट पे बात नहीं करते. गोल्डन इयर्स, आई मीन रिगार्डलेस आप जो भी देख लें, जितनी भी फिल्में देख लें, जितनी भी वो कर लें, आई मीन एवरीबॉडी रिफर्स. देन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो कनेक्शन रहा है, हालांकि बीच में मैं समझता हूँ 1996 ये जब शर्जील वगैरह गए, 94 से लेकर और मेरे ख्याल से 2006 तक, जब तक सोशल मीडिया नहीं आया था, तो वी वर नॉट कनेक्टेड फॉर 10 years एट ऑल. इवन वी वर इन पाकिस्तान और दुबई और सऊदी अरब. रिमेंबर हमारे लिहाज से हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग था ना उसमें. देख, मैं मो भाई बिली फंदी अपना स्लैश जो आता जाता था, लेकिन ऑल ऑफ दीज अपना हम इस्लामाबाद में होने की वजह से हमारा वो वेडनेसडेज का ग्रुप इसी तरह वो इवॉल्व. पहले वो था, पहले सैफ भी इसमें शामिल है. पहले वो वाज, याद है अपना वो भाई की और काशिफ की कॉफी नाइट्स होती थी यमी 36 के रात को. बिल्कुल बिल्कुल. उन्हें जिंदगी में पता नहीं कितनी कॉफी पी रात को 11 बजे. लेकिन वो और फिर उसके बाद इवेंचुअली बिकेम कॉफी से करते करते देन वी सेड अच्छा यार वेडनेसडे को मिलना जरूरी है. बट अली उमर, मतलब आई थिंक थैंक्स टू फेसबुक, बट आई मीन इन रियलिटी जब मैं 94 में 93 में ग्रेजुएट किया था, 94 में मैं सऊदी पाकिस्तान आया था, फिर सऊदी मूव हुआ था, बट वी ऑलवेज रिमेन्ड इन टच. मेरा फोन बिल तो आपको पता है हमेशा से ज्यादा आता था, सऊदी जाके और ज्यादा आने लगा था, क्योंकि दोस्तों यारों से ताल्लुक रखने का तरीका ही वही था. ठीक है ना. तो मेरा ख्याल है 95 में आई रिमेम्बर कि यू गाइस केम फॉर उम्रा. आई रिमेम्बर यू. मैं आया था. मैं एक्चुअली कि हाँ, मैंने उस वक्त जैसे ही मैं 96 में जब मैंने ग्रेजुएट किया ना, तो उसके बाद आए थे आप विंटर में मैंने सीएसएस किया था, तो उसके फौरन बाद उम्र के लिए आए थे. मैं आया था, हसन आया था मेरे, अब मैं हसन में तो छोटा सा था. उस वक्त मुझे याद है. उस वक्त सऊदी में हालात ये थे कि बैचलर्स के लिए घर बड़ी मुश्किल से मिलता था. बड़े डिफरेंट हालात थे, राइट. वो मोबाइल सेल फोन्स नहीं होते थे, घर का फोन नहीं मिलता था. इट वाज अ बिग चैलेंज. यार तो मिलना कितना मुश्किल था. किधर पहुंचोगे, क्या होगा, उसी टाइम पे आना है. करेक्ट. लंबे बाल हैं, काटना दे, मतलब इट वाज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम, राइट. और मुझे याद है लंबे बाल नहीं मैंने कटवाए थे, पता नहीं, आई डोंट नो. नहीं मैंने कहा था, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि बाल काटे, तो मैंने कहा था भाई लोग ध्यान रखना, बलद में पकड़े ना जाओ, बोले कि आ लेना बाल काट दो. तो वो भी दिन थे याद इस तरह कांटेक्ट में रहने का. और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में, क्योंकि मेरा आमिर से कांटेक्ट था, फोन पे कांटेक्ट सबसे था, I think, but you're right. Then there was a period, there was a pause in everybody's connectivity, right? You guys had the benefit of being in Islamabad, right? I moved to Saudi. Some guys stayed back. But I think, Shazil, I attended your wedding somehow, I remember. Yeah. You did. So I'm coming to that. You and Humayun and Amir were there in my wedding in 1998 because we always remained in touch through the phone, right? Yeah. At least. Right? और एक जमाना उस वक्त था कि पाकिस्तान आना भी जाना ज्यादा रहता था. फिर जैसे शादी हुई, बच्चे हुए, फिर पाकिस्तान आने जाने की फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई थी, राइट. तो फिर कनेक्टिविटी बिकेम डिफिकल्ट, राइट, टिल द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया embarked on us. I think then we truly sorry, go ahead, Kevin.
मैं कह रहा हमें सबसे पहले ग्रेजुएट होने वाला भी और शायद हमसे बहुत स्पीड में इसने पढ़ाई की थी, शर्जील, वो 94 में ही चला गया था. सो आई थिंक जो 94 और 96 का पीरियड था ना, वो भी बड़ा हमारा वो था एपिक. सो शर्जील, टेल अस, 94 में you went and then what? Where did you go? Yeah, 94 में I went to Pakistan, then I moved to Jeddah, right? Okay, So I right went away? to Jeddah. मतलब 3-4 महीने थे, because मैं पाकिस्तान आ गया था, जॉब का मेरा हो गया था. If you remember at that time Gulf War था, तो US में jobs भी बड़ी difficult थी. प्लान था कि मास्टर्स करेंगे. So the idea was to get into a top school, you needed 2 years of work experience, all of that thing, right? So I think that was all there. So I got the opportunity in Saudi in a listed company through a relative of mine. So I went there, उधर काम किया 2 साल. फिर उसके बाद उधर engagement हो गई, तो one thing from the other, right? I mean, then life takes its own course. मेरा CPA हो गया था, I got ranked in the US thankfully, and then एक दफा शादी हो जाती है तो फिर लाइफ के एक पर्सपेक्टिव बड़े क्वेश्चन है मेरा तुम सबसे, अभी ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा पूछता. सो व्हेन आई केम बैक 96 के बाद, तो आई यूज्ड टू मीट और पीपल, किड्स हु वर गोइंग टू स्टेट्स और आफ्टरवर्ड्स, और पीपल हु हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्टेट्स. मुझे कभी ये फील नहीं हुआ, लेकिन लोगों से लगता था कि जी आईवी स्कूल जाना है ना, बड़ा नाम होना चाहिए ये वो. सो व्हेन आई केम बैक एंड आई सॉ ऑल the other kids or students who came back from states, जो बड़े स्कूल से पढ़ के गए थे, या कराची में ग्रामर स्कूल के पढ़े हुए थे और बाद में वो पेन स्टेट से या फिर कोलंबिया से पढ़े हुए थे, वो थे. तो डिड यू एवर फील, शर्जील, मोहम्मद अली, अली उमर के एरिज़ोना स्टेट से पढ़ने के बाद, क्योंकि एक वो एवरेज स्कूल था, पार्टी स्कूल था, इतना नाम नहीं था, तो डिड यू एवर फील anything less or any shortcoming in you as far as education was concerned? मो पहले मैं दे दूं जवाब या नहीं, go ahead Shirji. Yeah, look, I honestly don't think के एक तो बात ये कि एक societal जो norms है ना, क्या we never really cared about that when we were in the US, right? क्योंकि तुम अगर देखो कि bunch of us who graduated from Arizona State did it by choice, but हमारे ग्रुप के और भी लोग थे who went to Ivy Leagues for their masters, right? So it wasn't about capability, it was about I also chose to stay back then. I ranked in my CPA. तो बात ये है कि वो पाकिस्तान में शायद अगर होता होगा societal, certain families make it becomes a culture thing, it becomes a trend thing, but it's difficult to get into those schools, right? So I never felt it, but maybe we didn't understand or appreciate the value of graduating from an Ivy League or a top school when we were embarking on that journey. Correct? Maybe at least मेरी तो understanding नहीं थी उससे कितना फर्क पड़ता है आपकी networking पे when you want to get into the real work of professional life, कितना पड़ेगा. So वो उसकी understanding I guess over the years developed. And for example, when it comes to our kids now, we aspire that they go to a top school, not necessarily an Ivy League school, but to a top school, because there are certain perspectives which we never got. Maybe because it was the environment that we grew up in and then how we grew, right? But I think there is a clear advantage and a benefit to going to a top school if you can. Not that we were not capable, we did not have the ecosystem probably I around was us. not capable, yaar. I'll be very honest. No. If you may allow me, Kevin, to finish, right? हर किसी की कैपेबिलिटी तो यार मेहनत से आती है ना. बात ये कि दिमाग तो हर एक को दिया अल्लाह ने. मेहनत की बात होती है, डिपेंड करता है how much effort you want to put in and how it's a process, right? अब जैसे my daughter mashallah goes to a very good school, right? Top school, Ivy League school. But because it was a process, not that mashallah, but she was very capable also, but she had to really work hard. But we had to provide her the facilitation. Yeah, देख अभी because दो तीन चीजें देखना. First time I met somebody, my father's friend के, या जो बाहर से पढ़ के आया था. I remember very well. I mean, शाम को हम बैठे अब्बू के पास, मैंने कहा यार मेरे दोस्त इसका बेटा भी पढ़ के आया है. तो अच्छा, अब now I'm still in O levels or A levels, मैं उससे पूछ रहा हूँ कौन से स्कूल में गए. He said for some small school in upstate New York. And he said कि अच्छा, मैंने कहा ठीक है, तुम उधर क्यों नहीं गए, उधर क्यों नहीं गए, उधर क्यों नहीं गए, you know. He's like looking at me, why would I want to go there? अच्छा, मैंने उससे पूछा यार कि you're in upstate New York, how many times did you go to New York City? He said कि यार 4 साल में शायद एक बार गया हूँगा. And it was so strange to me कि यार ये क्या मतलब, ये बंदा न्यूयॉर्क में रहते हैं, न्यूयॉर्क सिटी नहीं गया. फिर जब हम आए यहाँ पे अमेरिका आए तो रियलाइज किया कि यार I mean it does, I mean when you're in a city in New York, any university, you don't realize किसी चीज की कमी नहीं होती ना, कि आपको जो हमारे पाकिस्तान में होता है यार ये चीजें खरीदनी है तो कराची से मिलेंगी या लाहौर से मिलेंगी या फिर ये चीज वहीं पे होगी या फिर दुबई में होगी. US has, I mean, in the smallest of cities, you have everything that you can actually want. I mean, where there is theater, club, bars, and sport
sporting facilities, shopping, whatever you want to do is available everywhere. But at the same time, I mean, everybody knew those names. यार ये बड़े-बड़े colleges में जाना है, होना चाहिए. But you are But so right, nobody knew how to Umar. get into that. लेकिन nobody knew how to get into those ना, कि हमें पता ही नहीं था कि यार what is देख जो तेरी बेटी जो माशाल्लाह उसमें गई है, तो you knew from day one कि यार ये चीजें आनी चाहिए, करना चाहिए. We didn't know the process. I mean, हम तो but that's exactly what I said. करके यार हम भेज देंगे. I think also हो जाएगा तो कर देंगे. We had no extracurricular activities, nothing else that we could actually add to. I mean, you are so right, Ali Umar. This is what I said, right? I mean, जो process थी, एक तो देखो जरूरी है कि बच्चा भी capable हो, because we also need to make sure कि our kids are practical and realistic, to the point that Nabi said that we were not capable, right? It's not about capability. I'll tell you why I said that. So it's about the system of education that we were coming from. मैं तो अपनी बात करूं, मैट्रिक सिस्टम से आ रहे थे यार. ऑनेस्टली वो जो सिस्टम था या है आज भी, उसका स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं था. शायद कुछ लोग, आप लोग अली उमर वगैरह ओ लेवल्स वगैरह करके आए. नहीं, मैंने भी मैट्रिक किया है केविन. हाँ, तो वो मैं समझता हूँ वो इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं था वो एजुकेशन का, और उस वजह से हम एक मीडियोकर रेंज में ही रहते थे, और उसी में हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते थे. खैर, मेरा पॉइंट इसका फ्लिप साइड था. मेरा पॉइंट ये था, का जवाब रहता है, मेरे ख्याल से मुझे कभी कभी महसूस नहीं हुई इस बात की कि यार मैंने फील किया हो कि मैं उनसे कभी लेस था या लेस हूँ. और मैंने तो हमेशा आई हंग आउट विद पीपल हु वर लाइक बहुत ज्यादा मुझसे बेहतर यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए थे, लेकिन आई नेवर फेल्ट कि किसी भी लिहाज से मैंने अपने आप को नॉलेज के लिहाज से, बात करने के लिहाज से, अचीवमेंट के लिहाज से, तो आई फाउंड माई सेल्फ एट पार विद देम. सो नो रिग्रेट्स. यार कपल ऑफ पॉइंट्स. एक तो नॉट बाय चॉइस, लेकिन वन ये शर्जील को भी पता है, WP कैरी स्कूल ऑफ बिजनेस जो था, ये हमेशा से टॉप 20 में था. उस टाइम पीरियड में, लेट्स जस्ट से कि जिस वक्त हम पढ़ रहे थे उस वक्त टॉप 20 में था. तो उसकी स्टैंडिंग बिजनेस स्कूल की, ASU में बिजनेस स्कूल की, कैरी स्कूल की अच्छी थी. अराउंड आई डोंट नो कि क्या थी, 18वीं थी या टॉप 20 का मतलब ये होगा, चलो 18वीं 19वीं होगी. बट हैविंग सेड दैट, दो चीजें ना, या आप आईवी में हैं, जिस तरह मसलन बेटी हमारी पढ़ रही है आईवी स्कूल में, या आप आईवी में नहीं है. अगर आप पहले 4 ब्राउन, प्रिंसटन, ये मतलब हार्वर्ड नहीं है, उसके बाद फेयर प्लेइंग ग्राउंड है, द वे आई सी इट. क्योंकि उसका एक बैज तो है ना, एक वो फेदर इन द कैप तो है. एनी आईवी लीग स्कूल डज कैरी दैट वेट. people will take you more seriously. और आप भी नेम वो back at Harvard Law when I was doing this, that sort of a thing, you have a certain fraternity you deal with. लेकिन मुझे नहीं फील हुआ कि क्योंकि शायद हम आके अपने बिजनेसेस और इस टाइप की चीजों में करते रहे, तो I suppose I think हमारा पर्सपेक्टिव बड़ा फर्क था ना, कि I mean for us, हमारे लिए most people who came back to Islamabad, one of the things was कि सारे जो लोग इस्लामाबाद में थे, I think everybody came back. Right. कोई भी इस्लामाबाद Saf stayed back, but eventually, yeah. He also came back, and everybody knew कि यार अपना काम जाके करना है, अपने business में करना है. लेकिन अभी for बच्चों के लिहाज से जब I realized was, and then when we did more research on education and effects of education, it's like अभी when you're looking at this right now, जैसे हमारा YouTube channel है, you can go and actually audit or read anything on internet. I was coming to that exactly. उस वक्त ये चीज नहीं थी. अभी आप you can actually बिल्कुल अब अमेरिका law के courses और education के courses और business के courses at Harvard and MIT, you can still take those which are free. So now education is available to everybody now. But what is missing is the connections that those colleges give you. I mean, when you do that, the network that you create over there, that you cannot. That is irreplaceable. Absolutely. जो professors, so even architecture में, I realized यार जब मैं पढ़ता था तो मैंने कहा क्या हुआ, ऐसे सारे के सारे जो publish होते हैं लोग, वो सारे से 5 स्कूलों के पढ़े होते हैं. Then वो इजलाल याद है जब he went to MIT गया और वो उसने बाद में पढ़ाना शुरू किया. So then I realized इजलाल तो I think went to Princeton. हाँ, प्रिंसटन फिर MIT पढ़ाने नहीं चला गया ना फिर, and then he did this, and then उसके बाद भी रोड आइलैंड, and then he was correct architecture के स्कूल. अभी I think अभी उधर चला गया है. I think दोनों मियां बीवी का ना, they have become tenured professors at I think they're in France. नहीं उधर शायद अपना उधर जा रहे, टोरंटो जा रहे. तो बट I realized कि जब आप इनमें जाते हैं तो उसी नेटवर्क से वो एक दूसरे को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो रेफर भी उसी को करते हैं, आगे भी उसको पब्लिश भी उन्हीं को करते हैं, कनेक्टिविटी भी उन्हीं से मिलती है, सारे कॉन्टैक्ट, सारी networking, सारे references comes from that. So
Education is not different at all. I mean, it's the same books. اچھی طرح پڑھا دیں گے آپ تو آپ 2 مرتبہ پڑھ لیں 10 مرتبہ پڑھ لیں and you know there are different ways of looking and now it doesn't mean anything because you can actually have recordings of those classes live anywhere that you can see those but there's no replacement for that but I'll tell you what I've had the experience of both, right? I mean now so and to summarize, I think Mo آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ WP Carey School of Business was pretty good at that time. I was in MBA, Kevin, right? I was in IBA in Pakistan. IBA میں گھسنا آسان نہیں تھا, but then I still chose Arizona State University. And I'll give you a simple example. Why did I choose ASU? Because that was the easiest, that was the closest place to where my aunt lived, in Henderson, Nevada, in Las Vegas. You remember my puppy and Dadi were in Las Vegas, right? ان کے گھر بھی گئے تھے ہم لوگ. Correct. ہاں, تو میری چوائس کی وجہ کیا تھی؟ آپ IBA میں ہو, IBA was difficult to get into, right, in Pakistan, correct? تو اس کے باوجود I went to Arizona State کیونکہ ہمارے اس وقت جو thought process, mind process was بڑا very different, right? کہ یار دیکھنا ہے, Arizona State جانا ہے, باہر جانا ہے. تو someone told me, yaar, Arizona State is a good school. This is how I mean, I didn't do any research. I'm telling you, this is how I went about it, right? I think Arizona State had the most relaxed deadline for Correct. Well, admission. we didn't. That And I didn't want to go to got any the place paper cold from as well. PACC in which they had universities, list of universities. So what universities that I chose? مجھے کسی نے کہا نا State University جانا وہ اچھی ہوتی ہے. Arizona State University, Michigan State University, North Carolina State University اور Oklahoma State University. وہاں تو بڑے لوگ جاتے ہیں. چاروں جگہ ہو گیا. ہاں, چاروں جگہ ہو گیا تھا. So Michigan State University was the best. East Lansing ملی تھی. But میں نے 2 جگہ اپلائی کیا تھا. میں نے ایک اور یونیورسٹی میں بھی اپلائی کیا تھا. کون سی؟ UNLV, University of Nevada at Las Vegas, because my aunt lived in Henderson. وہ باتیں تیری کی جانب سے آداب عرض. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے. تھینک یو.